یہ براہ راست مناظر آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف چین میں موجود ہیں۔ چینی ہم منصب لی چانگ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اہم نوعیت کی یہ ملاقات ہے جو کہ وزیراعظم کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف چینی ہم منصب سے ملاقات کے لیے گریٹ ہال آف دی پیپلز میں موجود ہیں، اور ان کو اس کے ساتھ ساتھ گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے گا۔ اور ابھی اس وقت یہ اہم ملاقات جاری ہے، مصافحہ کیا جا رہا ہے وزیراعظم کی جانب سے، ان کے وفد کی جانب سے، اور بہت ہی اہم نوعیت کا دورہ چین ہے یہ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کا، جس میں اہم نوعیت کی ملاقاتیں کی جائیں گی، بہت سے اہم امور پر، بہت سے اہم معاہدوں پر بات چیت کی جائے گی۔ اور یہ مناظر آپ سما کی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیراعظم اس وقت چین میں موجود ہیں اور چین کے گریٹ ہال آف دی پیپلز میں موجود ہیں۔ بڑی اہم نوعیت کی یہاں پر ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیراعظم جب چین پہنچے تو بڑا ہی پرتپاک استقبال کیا گیا ان کا، چینی ہم منصب لی چانگ نے ان کا استقبال کیا، اور اب انہی کے ساتھ وزیراعظم موجود ہیں، اور اب سے کچھ دیر بعد وزیراعظم کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے گا۔ یہ براہ راست مناظر ہیں جو کہ سما کی سکرینز پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ مناظر آپ نے اپنے سکرینز پر دیکھے، بیجنگ کے یہ مناظر ہیں۔ وزیراعظم یا محمد شہباز شریف گریٹ ہال آف دی پیپلز میں موجود ہیں۔ Safeguarded common interests and injected positive energy to regional peace. This afternoon, President Xi Jinping will meet with Mr. Prime Minister, providing strategic guidance for further deepening bilateral relations. China is ready to work with Pakistan to pursue greater solidarity, carry forward traditional friendship, firmly support each other, and keep expanding practical cooperation to deliver more results in building a community with a shared future for the two countries.
Mr. Prime Minister, I'm ready to discuss with you issues of mutual interest and have in-depth discussions. Thank you, Mr. Prime Minister. My dear brother and a friend, Premier Li Qiang, honorable members of Chinese delegation and honorable members of Pakistan delegation. Excellency, thank you very much for your very warm invitation to visit China, and it is always a great pleasure to visit your great country. And each time when we come, we find new changes and major development taking place all over this wonderful country. At the outset, Excellency, I would like to express my deepest condolences to you and to the brotherly people of China on the tragic gas explosion at coal mine in Shanxi, where there was loss of life and people were injured. We express our full solidarity, and our thoughts and prayers are with victims and their families. Your Excellency, we are here at a critical moment of history. As you said rightly in your opening remarks, that we are celebrating 75 years of our glorious friendship and diplomatic relations established by our founding fathers. And they did a great job. They laid a strong foundation, a strong edifice between our two countries. And here we are trying to taking that legacy and moving in that direction of great journey towards promoting our relations. Your Excellency, while we are meeting today, the world is passing through a very critical moment. There is a crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran, and he didn't want to miss this great visit, and he assured me that he will be joining me in this meeting, and he has been traveling throughout the night. And he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership, along with Deputy Prime Minister Ishaq Dar, with his counterparts, not only in Iran, but also in the Gulf countries. We hope and pray to Allah Almighty that peace will be restored forever. And lots of ground has already been covered. Things are moving in the right direction. I'd like to thank President Xi Jinping and Chinese leadership for their great support to Pakistan to promote peace and achieve ceasefire. President Xi Jinping's 4-point agenda we fully endorse, and of course Deputy Premier Ishaq Dar's meeting with his counterpart, Foreign Minister of China Wang Yi. They announced 5-point support program for this ceasefire. Your Excellency, I think we have to really be together so that the world at large is at peace and business as usual starts again, because this crisis has hit not only the economy in the region, Pakistan, which is a net importer of oil and oil products, but the global community. Your Excellency, I would like to now stop here and like to hear your pearls of wisdom, your guidance, and then I will submit my considerations later on. Thank you.
वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में खिताब करे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान और चीन अपनी शानदार दोस्ती और सिफारती ताल्लुकात का 75वां साल मना रहे हैं। पाक चीन दोस्ती की बुनियाद हमारे बानी रहनुमाओं ने रखी थी। हमारे बानियों ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूत बुनियाद और मुस्तहकम इमारत कायम की। अब हम इस विरसे को आगे बढ़ा रहे हैं। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने के सफ़र पर गामज़न है। मजीद कहा गया उनकी जानिब से कि आज दुनिया एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है। खलीजी खित्ते में बहरान मौजूद है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी में मुखलिसाना किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मजीद कहा गया कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी तेहरान से वापस आए हैं। फील्ड मार्शल इस अहम दौरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। खलीजी खित्ते में बहरान मौजूद है और पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी में मुखलिसाना किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि बहुत सा काम पहले ही हो चुका है, चीज़ें दुरुस्त समत में जा रही हैं। वो रात भर सफ़र में रहे और इस मुलाकात में शामिल हुए। फील्ड मार्शल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात की। उन्होंने कहा कि मैं सदर शी जिनपिंग और चीनी क़यादत का पाकिस्तान को इस ज़मन में भरपूर ताउन फराहम करने पर शुक्रगुजार हूँ। उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी और अमरीकी क़यादत से अहम राबते किए और कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मज़ीद कहा गया कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने भी ईरान और खलीजी ममालिक में अपने हम मनसबों के साथ राबते किए। दुआ है कि अमन हमेशा के लिए बहाल हो। पाकिस्तान ने हमेशा यही कोशिश की है कि अमन कायम हो। अमन के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि मामला दुरुस्त समत में ही आगे बढ़ें। अमन के क़याम और जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर सदर शी जिनपिंग और उनकी क़यादत की जानिब से उनकी क़यादत का मशकूर हूँ, ऐसा कहा गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि हम सदर शी जिनपिंग के 4 निकाती एजेंडे की भरपूर तायद करते हैं। तो यह अहम नौयत की गुफ्तगू की गई है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से।